Welcome, dear students. This is our 7th lecture on Newtonian mechanics. तो आज के लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बात करेंगे and then we shall see its few applications like recoil of a gun and rocket propulsion. तो पहले हम देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है. The law of conservation of momentum, it states that if no net external force acts on a closed system of bodies, the total momentum of this closed system remains constant. तो यहाँ पे closed system आता है या इसको हम isolated system भी कह सकते हैं. The condition is कि अगर हम total में external force देखें, summation, there may be many external forces, so unka vector sum that should be equal to null vector, that should be 0. So if the net external force on a system is 0, forces हो सकते हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस हो सकते हैं एक सिस्टम पे वो एक्ट कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम उनका रिजल्टेंट देखें टोटल में the net force should be 0. We have got a system of particles like this. इस पे एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे है, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे है, तीसरा एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे है, and so on up to even there can be n external forces, but their resultant should be 0. And if that resultant is 0, it implies total momentum of the system is a constant. It will not change. And यहाँ पे जो हम momentum कहते हैं तो we mean linear momentum, because एक और momentum है that is angular momentum. लेकिन जब हम angular momentum हमें कहना होगा तो we will definitely write or say angular momentum. तो जब हम सिर्फ momentum कहते हैं तो it is understood that we talk about the linear momentum. तो total momentum of a system is constant. एक और चीज इसमें ये बात है समझने की कि अगर एक सिस्टम में 2 बॉडीज हुई, 3 बॉडीज हुई, या ग्रेटर देन 3 बॉडीज, मोर देन 2 बॉडीज अगर किसी सिस्टम में है, तो हर बॉडी का मोमेंटम चेंज हो सकता है. If we have got 2 bodies, we have got body A, it has got some momentum, so let us say PA. We have got another body B and we have got its momentum PB. So can PA change? Yes, PA can change. Can PB change? Yes, it can change. External force total में 0 है, total momentum of the system constant है, लेकिन individual body के जो momenta है they can change. This PA can change, this PB can change, but their sum, the total momentum PA plus PB should be a constant. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि अगर एक सिस्टम है उसमें कुछ बॉडीज हैं और उस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इंडिविजुअल बॉडीज के मोमेंटा चेंज हो सकते हैं, बट उनका जो टोटल वेक्टर सम है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट. दैट इज व्हाट वी मीन by the law of conservation of momentum. तो अगर हमारे पास एक सिस्टम है and we have got n particles जिनके मास हैं m1, m2 and so on up to mn, and initially इन bodies की velocity है u1, u2 and so on up to un.
यानी पहली बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी है u1, जो दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी है u2 एंड सो ऑन अप टू nth पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी है un. इन जनरल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कोलिजन्स में यूज करते हैं. सपोजिंग those particles undergo collisions, तो इनकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाती हैं. तो पहली बॉडी की वेलोसिटी, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी u1 थी, अब वो चेंज होके v1 बन गई. दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज हुई, इट इज नाउ v2. एंड इसी तरह अप टू nth पार्टिकल उसकी वेलोसिटी vn बन गई. सो पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज हो गई. तो हम जरा देखें कि इनिशियली टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना था. तो अगर हम पहले पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम देखना चाहें, दैट विल बी m1 u1. दूसरे पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम देखना चाहें, दैट विल बी m2 u2 एंड सो ऑन. nth पार्टिकल का मोमेंटम दैट विल बी mn un. तो इनको अगर हम सम करेंगे तो वी विल गेट द टोटल initial momentum of the system. This was total initial momentum of the system. लेकिन अब they collided with each other, one another. अब इनकी velocities change हो गई, तो obviously इनके individual momenta भी change हो गए. तो अगर हम पहले पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम देखना चाहें, दैट विल बी m1 v1. अगर हम दूसरे पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम देखना चाहें, दैट विल बी m2 v2 एंड सो ऑन. हम nth पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम देखना चाहें आफ्टर कोलिजन, दैट विल बी mn vn. और अगर हम टोटल फाइनल मोमेंटम देखना चाहें तो वी विल ऐड दोज क्वांटिटीज. तो दिस गिव्स मी द टोटल फाइनल मोमेंटम. सो पहली बॉडी का मोमेंटम था m1 u1, अब वो चेंज होके m1 v1 बन गया है. एंड सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल्स, बट मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ सेज कि टोटल इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. सो वी शुड गेट दिस इक्वेशन कि इनिशियली टोटल जितना मोमेंटम था दैट शुड रिमेन फाइनली टोटल मोमेंटम कितना है सिस्टम का. So we have taken a general example of n particles. Let us take a special case in which we have got only 2 particles, and that is how we will prove the law of conservation of momentum. तो यहाँ पे ये बात याद रखने लायक है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ लीड अस टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. We will take a system of only 2 bodies. There is one body, first body A and second body B. So supposing they are repelling each other, so force on A due to B, this is force on A due to B, तो इसको हम FAB से डिनोट करते हैं. And similarly, this is force on B due to body A, तो इसको हम FBA से डिनोट करते हैं. And Newton's third law says the two forces are equal but oppositely directed. तो हमने इस फोर्स को along पॉजिटिव x एक्सिस दिखाया है FBA को, तो FAB को हमने along नेगेटिव x एक्सिस के along दिखाया है. Obviously, the two forces have equal magnitude but opposite direction. So supposing body A has got momentum PA and इस पे जो force है that is FAB, force on A due to body B.
इसी तरह we will see the momentum of body B and that is PB, और इस पर जो फोर्स है that is FBA, फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू A। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ सेज कि अगर हमें किसी बॉडी पे फोर्स देखना है तो वी हैव टू पुट दैट इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम में वो मोमेंटम चेंज हुआ। सो लेट अस अप्लाई ऑन बॉडी ए। तो टोटल मोमेंटम हम देखते हैं कि दैट इज पी ए प्लस पी बी, दिस इज द टोटल मोमेंटम। तो अब हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो पहले हम बॉडी ए पे अप्लाई करेंगे। तो वी कैन राइट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी will be equal to change in momentum of body A with respect to time. So this is Newton's second law for body A. तो इसी तरह हम बॉडी B के लिए न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं। दिस इज फोर्स ऑन B ड्यू टू A. This is force which is being applied on body B. So it will change momentum of body B. So it will be equal to change in momentum of body B per unit time. We shall add those two equations. So we will add FAB plus FBA. So we can write FAB plus FBA is equal to dPA by dt plus dPB by dt. तो राइट हैंड साइड में हम d बाई डी टी को कॉमन आउट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट पी ए प्लस पी बी। व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड? न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज कि ये फोर्स और ये फोर्स दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे द टोटल सम विल बी जीरो। So we are getting d by dt of PA plus PB equal to 0. तो जिस क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन जीरो हो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। सो चूंकि हमें d by dt of PA plus PB जीरो मिलता है, so that means the sum should be constant. हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टोटल मोमेंटम जीरो मिलता है और जिस चीज की डिफरेंशिएशन जीरो होती है वो कांस्टेंट होता है। सो ऑब्वियसली द सम PA प्लस PB इज अ कांस्टेंट। क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन ऑफ PA प्लस PB जीरो मिला, सो दैट मीन्स जिस चीज की डिफरेंशिएशन हमें जीरो मिली वो जीरो, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। So hence we get PA plus PB is a constant. So this is how we prove Newton's third law. This is how we prove the law of conservation of momentum using Newton's second law and third law. Now let us apply it. We will apply it to recoil of gun. Initially we had a system of gun and bullet. So let us see what was total initial momentum. Total initial momentum is total mass, which is m plus small m. M is mass of gun, small m is mass of bullet. Both were at rest, so the total velocity is zero. So the total initial momentum is zero. So the total initial momentum is zero. अब ये गन जो है ये बुलेट पे फायर करता है and the force is internal. Gun pushes the bullet in forward direction. This is force on bullet, small m, due to capital M in the forward direction. Newton's third law says
the bullet will apply a force on the gun in the backward direction. So F capital M small m. This is force on gun due to bullet and it will be in the backward direction. So this backward force is called recoil of gun. अच्छा, bullet जो है that moves forward with velocity small v, and this gun recoils backward with the velocity capital V. Right? So अगर हम total final momentum देखना चाहें, the total final momentum of gun will be mv, both capital, plus final momentum of the bullet, that will be m into v, both small. So this will be the total final momentum of the system. But conservation of momentum says the net external force to 0 है. Force apply हुआ, but gun applied on bullet and bullet applied on gun. These are internal forces. तो external force कोई apply हुआ नहीं. So total initial momentum, which is 0, must be equal to total final momentum. So we will equate the two momenta. So we will equate the two momentum. We will say capital M into capital V plus small m into small v is 0. तो इसको हम राइट हैंड साइड पे, इस स्मॉल क्वांटिटी को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो we will get m into capital V is equal to minus m into small v. और ये जो कैपिटल m है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा. So we will get expression for velocity of the gun as minus m by capital M into small v. So this is called recoil velocity of the gun. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स के जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव करती है, दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. गन की वेलोसिटी इज अपोजिट टू दैट, सो गन रिकॉइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अच्छा, एक और चीज इसमें हम ये देखते हैं कि द रिकॉइल वेलोसिटी of the gun is inversely proportional to mass of the gun. So gun जितना heavy होगा, recoil velocity उतनी कम होगी. अब अगर गनमैन इस गन को अपने शोल्डर के साथ टाइटली होल्ड करे तो इस मास में गन का मास प्लस गनमैन का मास, दोनों मास ऐड हो जाएंगे. So that will tremendously increase mass and that will tremendously decrease the recoil velocity. तो अगर एक गनमैन चाहता है कि मैं फायर करूं और गन recoil velocity ज्यादा ना दे, तो he has to hold tightly gun with shoulder while firing. Another practical example of the law of conservation of momentum is the rocket propulsion. Rocket is used to take a payload system. या तो ये payload system हमें अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में डालना है, या इसको हमें किसी और हेवनली बॉडी लाइक मून, लाइक मार्स, वहां पे ले जाना है. तो जिस चीज को ले जाना है उसको हम रॉकेट के बिल्कुल स्टार्ट में रखते हैं, एंड इसका जो स्टार्टिंग एंड है इसको हम कोन शेप देते हैं, बिकॉज इट हैज टू ट्रेवल थ्रू एयर. तो वी हैव टू मेक इट्स बॉडी स्ट्रीमलाइन. तो जिस चीज को हमें अर्थ से दूसरी जगह पे ले जाना है, वी कॉल दैट पेलोड सिस्टम, और उसको हम रॉकेट के फ्रंट में रखते हैं. उसके बाद दूसरा चीज जो इसमें है, दैट इज कॉल्ड गाइडेंस सिस्टम. दिस कनेक्ट्स विद द कंट्रोल पैनल ऑन ग्राउंड. उसके बाद आती है बारी फ्यूल. सो दिस इज फ्यूल, और उसके बाद ऑक्सीडाइजर. ऑक्सीडाइजर इज व्हाट बर्न्स दिस फ्यूल. तो इनिशियली इनके बीच सेपरेशन होती है, लेकिन जब हमें रॉकेट को प्रोपेल करना होता है तो हम ये सेपरेशन हटा देते हैं. सो वी मिक्स फ्यूल विद ऑक्सीडाइजर
and this fuel burns. एंड ऑब्वियसली जब फ्यूल बर्न होता है तो वहां पे गैस पैदा होती है, तो वहां पे एग्जॉस्ट गैस पैदा होती है और उस एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकलने के लिए एक टंग जगह दी जाती है जिसको हम नोजल कहते हैं. सो दिस एग्जॉस्ट गैस comes out at a very large speed. तो rocket applies force on exhaust gas. So this is force on exhaust gas due to the system of rocket. Now Newton's third law says that this gas will apply force on rocket in the opposite direction. So we will get a force on rocket due to this exhaust gas but in the forward direction, and this force propels rocket in the forward direction. So this is how rocket propulsion works. Now we will derive an expression which is called the rocket equation, and it was derived for the first time by Skolkowski in 1903. Imagine we have rocket in free space, free from all gravitational attraction. Its mass is m at that instant and its velocity is v. So अगर हम इसका initial momentum देखना चाहें, it will be simply capital M into v. So the total initial momentum of this rocket system is m into v, this much. Supposing after infinitesimal time, इस और इसमें जो फर्क है that is of infinitesimal dt. In that infinitesimal dt, the rocket ejects gas of mass dm, small dm. तो उतना मास रॉकेट में से कम हो जाएगा. तो इनिशियली रॉकेट का मास कैपिटल एम था, अब ये डिक्रीज होके m माइनस dm हो गया. और रॉकेट चूंकि हल्का हो गया तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी. तो इनिशियली इसकी स्पीड थी v, अब इसमें इंक्रीमेंट हुई, इसमें एडिशन हुई, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस टू v प्लस dv. अच्छा, एक और चीज, the rocket is ejecting gas at a speed of u, but this is the speed of exhaust gas relative to the rocket. We are on the surface of earth, so according to the earth frame, what should be the velocity of exhaust gas? Because exhaust होने से पहले गैस की भी वेलोसिटी वही थी जो रॉकेट की थी, सो द वेलोसिटी वाज v. और अगर ये रॉकेट इस गैस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फायर करता तो हमें वेलोसिटी मिलती v प्लस u. लेकिन ये रॉकेट गैस को फायर करता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो वी विल गेट वेलोसिटी v माइनस u. So this is the velocity of exhaust gas as per the earth frame, because पहले गैस की velocity वही थी, it was very much inside the rocket, तो इसकी velocity वही थी जो rocket की velocity थी v. Rocket fires it in backward direction, so it is given a velocity minus u as per our system. So the net velocity of the gas will be v minus u. तो अब अगर हम फाइनल मोमेंटम ऑफ द गैस रॉकेट सिस्टम देखना चाहें, तो एक तो रॉकेट है जिसका मास है m माइनस dm और उसकी वेलोसिटी है v प्लस dv, और एक और क्वांटिटी है एग्जॉस्ट गैस विच इज लीविंग द रॉकेट जिसका मास है dm और उसकी वेलोसिटी है v माइनस u.
सो अगर हम फाइनल मोमेंटम देखना चाहें, मास ऑफ द रॉकेट, it is velocity, this is mass of the exhaust gas, it is velocity. और चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो सकता है. सो वी हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम है यहाँ पे वी हैव टू पुट दिस इक्वल टू दिस फाइनल मोमेंटम. सो वी विल अप्लाई the law of conservation of momentum. So we will write initial momentum m into v is equal to final momentum, that is m minus dm into v plus dv plus dm into v minus u. तो राइट हैंड साइड पे हम ब्रैकेट्स हटा देंगे. सो वी विल राइट m into v प्लस m into dv. अब हम माइनस dm से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल राइट माइनस dm into v, देन माइनस dm into dv. अब हम इस dm से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट प्लस dm into v माइनस dm into u. अच्छा, dm इज इनफाइनाइटेसिमल मास ऑफ रॉकेट जो कि बर्न होके बाहर निकल गया, एंड dv इज इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी जो रॉकेट को मिली. बोथ हैव वेरी स्मॉल वैल्यू, और जब इनका हम प्रोडक्ट लेंगे तो वी कैन नेग्लेक्ट दैट. सो दिस विल गो. इसी तरह यहाँ पे प्लस dmv है, यहाँ पे माइनस dmv है, ये कैंसिल हो जाएंगे. अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में m इंटू वी है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में m इंटू वी है, तो ये दोनों भी चले जाएंगे. तो वी आर लेफ्ट विद लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में m इंटू dv, m इज कैपिटल, देन माइनस स्मॉल dm into u. हम ऐसा करेंगे, ये जो नेगेटिव टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो वी विल गेट पॉजिटिव टर्म. वी विल गेट स्मॉल dm into u इज इक्वल टू m into dv, और we can write dv is equal to, यानी इसको अपनी जगह पे रखेंगे, this m will go here and it will go into division, so we can get u into d small m by capital M. So this is what we get after applying the law of conservation of momentum. Acha, what is this dm? This is decrease in the mass of rocket, because dm is the mass of gas that leaves the rocket. So dm, small dm, अगर इसके साथ मैं प्लस रखूं, so this is increase in the mass of eject gas, and this should be equal to minus d capital M, because dm is the change in mass of the rocket, and obviously जितना गैस इजेक्ट होगा रॉकेट से उतना रॉकेट का जो मास है कम होगा. So the amount of increase in mass of eject gas will equal to decrease in mass of the rocket. तो यहाँ पे हम dm, small dm की जगह माइनस d of capital M लिख सकते हैं. So this is what we get. Next we shall integrate this equation. So we will integrate it here and we will integrate it here, because u is a constant. U is the speed with which rocket ejects gas. तो हमें limits of integration पता होने चाहिए. So let initially at time t is equal to 0, the mass of the rocket was m0. So initially mass of the rocket was m0.
और उस वक्त velocity of the rocket was v naught. So the lower limits are for velocity v naught, for mass m naught. And after some time t, final mass of the rocket is capital M, and final velocity of the rocket is v. Right? तो अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे द इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल विल गो. तो वी विल गेट v with limits of integration v naught to v is equal to minus u और dm by m. तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी log, natural log of mass m, and with limits m naught to m. तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लिमिट्स अप्लाई करें तो फर्स्ट वी विल अप्लाई अपर लिमिट, सो v, देन फार्मूला का माइनस, देन लोअर लिमिट विच इज v नॉट इज इक्वल टू माइनस u, और यहाँ पर भी हम पहले m का वैल्यू अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट log टू द बेस e ऑफ m, देन फार्मूला का माइनस, फिर हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, सो दिस इज log टू द बेस e ऑफ m नॉट. राइट? ओके, सो नाउ इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं. वी कैन राइट v माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस u. लॉग की प्रॉपर्टी है कि log ऑफ x माइनस log ऑफ y, इसको हम इकट्ठे लिख सकते हैं log ऑफ x बाई y. राइट? तो वो हम करेंगे, पहले हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बनेगी. सो वी विल गेट log e, log टू द बेस e ऑफ m नॉट, और जो पॉजिटिव टर्म थी चूंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी विल गेट log टू द बेस e ऑफ m. अब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ x बाई y. सो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म. तो इसको हम लिख सकते हैं u log टू द बेस e ऑफ m नॉट बाई m, v minus v naught. So this is what we call the rocket equation. So this is the rocket equation. So generally rocket starts from rest, so that means the initial velocity is 0, and this is the initial mass of the rocket before firing. तो इसमें हम v naught का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो we get this equation, and this equation is called the rocket equation. So rocket equation gives me velocity of rocket after some time t. This is velocity of rocket at time t. जिस टाइम पे इसका मास है m, and m naught is its initial mass, and u is the eject speed. It is the speed with which the gas is ejected by the rocket in the backward direction. So this is the rocket equation.